Hi guys. हेलो हेलो। तो आज हम अगेन पीवाईक्यूज करेंगे। And yes, I'm really sorry that yesterday's video बहुत abruptly बंद हो गई थी because मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था. But yeah, I'll just make up. I'll just complete it what was left. Hi guys. So let's start in 1 minute. ठीक है. एक मिनट में स्टार्ट करते हैं. पीवाईक्यूज करेंगे एंड देन माइक्रोब्स वाला चैप्टर करेंगे.
Okay, so let's start. Right. So before start, okay, a quick intro. So I am Aarushi Anand, and I'm from Hindu College, and I'm currently doing BSc Zoology honors, and I got 100 percentile in biology, psychology, and English, and 99.8 in chemistry, and around 99.8 in physics. Then let us just quickly go through what other things are offered by ExamFactor. So the first thing is mock test series that you can check out on their website, and usme it's a very good series. You can get scholarship also for that and the crash course. And like um, you need mock test series because you need to practice a lot of questions जो भी same pattern में हो. So that would be really beneficial for you. Again, the crash course also would be very beneficial for you because revision हो जाएगा आप लोगों का, and revision is very important at this point of time because आप लोगों ने सब एक एक बार पढ़ लिया होगा, but you might be forgetting something, and you never know what can come in CUET exam, right? That is why we are doing PYQ series, so that you get a better idea of what was there in CUET in the previous years. And it has only been 2 years for CUET, so we can't really predict what's gonna come next because those are you हैं. But jitna you will practice, jitna you will revise, the more you'll be very the more you would be attuned to the kind of questions that come in CUET, and the more you're gonna the more it'll be easier for you to do it, right? So yeah, that was the thing, and I think let's get started with questions. Again, one more thing that you need to practice a lot of papers. The reason behind that is you never know what like pattern changes because those साल ही हुए हैं and this is the third year, so they might change some of it, they might make it difficult and stuff. And also CBT से आपको अब थोड़ा सा जान पहचान करने की ज़रूरत है because that's how the paper comes. And also you need to set a strategy for attempting and not attempting questions, like which questions you should attempt and which questions you should leave, because there's an option of leaving the question. It makes a lot of difference. Like it makes a very 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 big difference which questions you attempt and which questions you leave. So like there might be a question जो तुम्हें आता हो but तुम छोड़ दो एंड तुम्हारे मार्क्स ना लगे उसके, एंड देयर माइट बी अ क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता और तुम अटेम्प्ट कर लो और तुम्हारे मार्क्स कट जाए. So that's also very important, and that what makes mock tests and practice and revision a lot important, right? So let's start with questions जो हम कर रहे थे कल. चलो let's start. Just give me a second. Yes. So yep, so this is the first question on your screens. It says the correct sequence of steps involved in polymerase chain reaction PCR are A. DNA polymerase is used to extend the primers using oligonucleotides. Desired DNA fragments are denatured. Amplified fragments are ligated with vector for cloning, and oligonucleotides are added. So your options are CAPD, ACBD, ADBC, and VDAC. Giving you a minute to solve this question.
बता दो आंसर क्या होगा। कम ऑन गाइस आंसर। चलो मैं ही बताती हूँ। सो व्हाट इज पीसीआर बेसिकली? पीसीआर is basically to amplify the gene product, right? So I mean the recombinant DNA, right? तो देखो हमने एक बार रिकॉम्बिनेशन कर दी, उसके बाद हमें ये तो नहीं चाहिए कि वी ओनली हैव, उसके बाद हमें ये तो नहीं चाहिए कि हम थोड़े से उस डीएनए से काम करें, है ना, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा वो, राइट? सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए जब तक डबल स्ट्रैंडेड रहेगा तब तक तो जो रेप्लिकेशन है वो हमारे जीनोम में भी नहीं होती। तो पीसीआर में कैसे होगी? तो रेप्लिकेशन विदाउट, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंड विदाउट द डीएनए बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो सबसे पहले तो वील हैव टू डीनेचर इट, सबसे पहले तो वील हैव टू मेक इट सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट? सो द फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स बी, राइट? अब तुम अगर ऑप्शंस में देखो तो बी में बी वाला जो पॉइंट है एज द फर्स्ट ऑप्शन, आई मीन द फर्स्ट correct sequence, that is only in option number 4. So in any case option number 4 is right, we know that, but एक बार फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट? बी के बाद कहता है डी, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, राइट? एंड उसके बाद कहता है ठीक है, और ये भी हम देख रहे हैं कि जो सी है दैट हैज़ टू गो इन द लास्ट, एम्पलीफिकेशन सबसे लास्ट में ही होगी, बिकॉज एम्पलीफिकेशन इज अ रेपिटेड स्टेप। वो मतलब इन जितना भी ये 3 स्टेप बोला है उसको रिपीट करना, दैट इज एम्पलीफिकेशन। और एक बार एम्पलीफिकेशन हुई उसी के बाद लाइगेशन होगी, राइट? सो दैट हैज टू बी सी एट द एंड, राइट? अब डी, डी और ए बचा। डी और ए में पहले ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डालेंगे तभी तो डीएनए पॉलीमरेज से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज करके उसको एक्सटेंड करेंगे, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स 4 विच इज बी डी ए सी। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। यू कैन एक बार रीड, आई मीन आई विल रीड इट फॉर यू ताकि तुम्हें पीसीआर समझ आ जाए। सो ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स: डीनेचरेशन, प्राइमर हीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स, राइट? सो डीनेचरेशन में द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ईच साइकिल अब उसी साइकिल को बार बार रिपीट करना इज नोन एज एम्पलीफिकेशन, राइट? सो ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स: डीनेचरेशन, प्राइमर एंड हीलिंग, an extension of the primers. So denaturation is what? Double stranded DNA molecules को हम heat करते हैं and we make it into 2 separate strands using a single stranded DNA molecule, into a single stranded DNA molecules. That's what I said, that is what I said, right? So this process is called denaturation. Each strand has acts as a template for DNA synthesis. Unhealing, in this step, 2 primers unheal, which is hybridized to each other of the single stranded DNA template, and फिर उसमें हम क्या डालते हैं? डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, और वो हम किसकी डालते हैं? टैग पॉलीमरेज, राइट? ताकि टैग पॉलीमरेज कैन विथस्टैंड हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और रेप्लिकेशन कर सकता है। डीनेचरेशन में हम हायर टेम्परेचर करते हैं, इसलिए वी नीड अ पॉलीमरेज जो हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर को withstand कर सके, right? So this is, then we do unhealing, then extension of the primers, that is single stranded से again replication हो रही है, double stranded बन रहा है. So by this we get
रेप्लिकेटेड डुप्लीकेट कॉपी, और उसके बाद उसको हम उसको रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसेस को, तो एम्पलीफिकेशन हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Select the correct statement or statements from the following. So it says A. Spermatogonia always undergo meiotic divisions. B is primary spermatocytes divide by mitotic cell division. C says secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division, and spermatozoa are transformed into spermatids. Okay, now you have to choose the correct option. Giving you a minute to do that. Right, so got the answer. Um, बताओ. ओके, सो चलो हम इसके बारे में समझते हैं इसको. सो इट सेज कि स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिविजन्स. ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ना, स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट? एंड spermatogonias are diploid cells on the inside wall of the seminiferous tubules, right? And they multiply by mitotic division. ठीक है, and they right, and uske wait, and then they become primary spermatocytes, right? So that undergo meiosis 1. So option 1 is correct. Option A is wrong. Then option B, primary spermatocytes divide by mitotic cell division. Now ये उल्टा लिखा है. Primary spermatocytes में meiosis 1 होती है. ठीक है. Then statement D says spermatozoa transfer into spermatids. ठीक है. But जहाँ तक मुझे याद है, it's the opposite. Spermatids
becomes are transferred to spermatozoa by a process known as spermiogenesis. ठीक है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट भी करें तो ऑप्शन सी करेक्ट बचता है. सो आर ऑप्शन तो करेक्ट आंसर बिकम्स टू, ऑप्शन टू, विच इज करेक्ट. ठीक है, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 says, which of the following metals cannot be recovered from manual recycling process of e-waste? 1 gold, 2 mercury, 3 copper and 4 nickel. वाओ, ये तो अच्छा सवाल है. डिलीटेड पार्ट में से आया है. बताओ जल्दी से क्या होगा. राइट, सो आंसर आपको पता चल गया. आई मीन डिड यू थिंक ऑफ एन आंसर? इस क्वेश्चन में कुछ बहुत सोचने को तो है नहीं, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को अगेन. सो इट सेज कि gold, mercury, copper, nickel. So e-waste are what? Electronic waste, right? So these generally include what? Electronic goods such as computers, right? Phones and etc. So these wastes are obviously rich in metals like copper, nickel, etc. ठीक है, एंड रिसाइकलिंग हम करते हैं इसके बाद. तो अब इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि क्यों समथिंग इज द आंसर एंड द others are not the answer. ऐसा कुछ eliminate या कुछ करने का ऑप्शन नहीं है. You will just have to remember कि गोल्ड, कॉपर एंड निकल एंड आयरन, सिलिकन, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड that only leaves us with mercury. So that's the option. That's the answer. एंड एक बार हम चेक भी कर लेते हैं. सो yes, this is the answer. Right. Now question number 4. Bt toxin produced by Bacillus thuringiensis is resistant to 1 drought, 2 insects, 4 nematodes and 3 nematodes and 4 virus. This is the very easy. इसका आंसर तो सिर्फ एक ही है.
So yeah, what's the answer? क्या ऑप्शन है इसका? हाँ, so question number 4 says question number 4 says कि जो बीडी टॉक्सिन है वो किसको रेजिस्टेंट करता है, राइट? सो ड्रॉट इज अ नेचुरल थिंग, natural calamity sort of a thing. Viruses, nematodes and insects. So yeah, we do know that insects को resistant करते हैं, right? और there are different kind of varieties, है ना? तो बीटी टॉक, बीटी कॉटन की, बीटी कॉर्न की, बीटी लाइक जो बीटी प्लांट्स हैं, राइट? सो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वो रेजिस्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करते हैं, राइट? एंड कैसे टाइप के इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करते हैं? कोलियोप्टेरेंस लाइक बीटल्स हो गए, लेपिडोप्टेरेंस लाइक टोबैको बडवर्म हो गई, आर्मी वर्म हो गई, डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस क्या होते हैं? आपके फ्लाइज एंड मस्कीटोज जिनके टू विंग्स होते हैं, है ना? सो दीज आर बैसिलस थेरेंजेनेसिस की रेजिस्टेंट, these are what Bacillus thuringiensis is resistant to, ठीक है? एंड ये प्रोड्यूस क्या करता है, मतलब they have a toxin, bt toxin, which is a protein, ठीक है? And it forms protein crystals in during a particular phase of their growth, है ना? These crystals are toxic insecticidal protein, take that in mind. एंड ये कब होते हैं? प्रोटॉक्सिन की तरह प्रोड्यूस होता है वो, है ना? और जब वो इंसेक्ट के गट में जाते हैं तो उनका अल्कलाइन गट होता है, एंड दैट बिकम्स इनटू अ टॉक्सिक, एंड वो क्या करते हैं? परफोरेशन पर पोर्स क्रिएट कर देता है, स्वेल कर देता है, एंड दैट इवेंचुअली व्हाट लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट. Now question number 5. In some organisms, male has ZZ chromosomes and female has ZW chromosome. This type of sex determination is found in. So this type of sex determination is found in, your options are Drosophila, hen, cockroach, snail. Okay, so it's a very easy question, है ना? तो this type of same ZZ chromosomes, इसको क्या कहते हैं? Female heterogameity, है ना? तो this type of sex determination is in
मेल्स सॉरी इन हेन्स मतलब बर्ड्स कह सकते हो वो कह सकते हो बर्ड्स कह सकते हो बेसिकली राइट. So yeah, question number 6. The Organization Act set up by the Indian government to take decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms. GM organisms क्या होते हैं? Genetically modified organisms is one Genetic Engineering Approval Committee GAEC, two Genetic Modification Approval Committee GMEC, three Indian Council of Agriculture Research and All India Institute of Medical Sciences. Now, what is the correct answer? चलो तो if you are not giving answers anyways तो मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ. Right. So the this is इसका answer is one. It might seems कि ये two होगा genetic modification approval committee, but the answer is one genetically engineering approval committee, and this is given in the biotech का chapter. Sorry, biotech and the applications का chapter. Wait, what happened? ठीक है. So now question number 7. Which of the following is a hormone releasing IUD? Multilode 375, 2 LNG 20, 3 cervical cap and 4 volt. तो cervical cap और volt को तो आप ऐसे eliminate कर दो. LNG 20 और multilode 375 में से tell me an answer. हाँ तो इसका आंसर क्या है LNG 20 और मल्टीलोड 375 में से. सो होता क्या है कि जो आपका LNG 20 है that is the right answer. It's a hormone releasing IOD and it makes the uterus very unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperms. So that makes it a very good contraceptive device and yes that becomes your answer as well. Hormone releasing IOD तो हम यूज करते हैं. तो hormone releasing क्यों करते हैं? Hormone IOD तो ठीक है चलो you know intrauterine device हो गया. uh, but hormone releasing इसलिए ताकि the chances of it is better है ना. So okay, on to the next question.
So the next question is the puffed up appearance of dough is due to the production of oxygen gas, CO2 gas, ethyl alcohol and pyruvic acid. ये तो बहुत बहुत easy है, लेकिन फिर भी चलो 2 सेकेंड का टाइम to tell me the answer. तो ये तो जब भी ऐसा ये वाला क्वेश्चन आता है या ये वाला हम टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कल भी हम यही पढ़ रहे थे, तो आई ऑलवेज से कि यार ये कैसा सवाल है, क्योंकि ये तो हम कब से कर रहे हैं, राइट? ये हम we've been doing this sort of question since class 7th or something, है ना? And this is the easiest thing that is there, that exists actually. So the answer for this is what? The answer for this is obviously CO2 gas, है ना? तो चलो इसमें तो कुछ explain करने वाला नहीं है. Let's go to question number 9. Question number 9 is again correct statement or incorrect statement or option. So select the statements which do not hold true for cancer and choose the correct answer from your options given below. Now this is a very nice question. ठीक है, इसमें पहली स्टेटमेंट लिखती है do not hold true for cancer and यहाँ पे लिखती है करेक्ट आंसर क्या है. बताओ इसका आंसर क्या होगा? राइट वाले चूज करना है, रॉन्ग वाले चूज करना है? एंड यस, मैं क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ एक बार, ऑफ कोर्स. देन आप अपना राइट और रॉन्ग दोनों के हिसाब से बताना. देन आई टेल यू इफ यू हैव टू टेल द राइट आंसर और द रॉन्ग आंसर, मतलब राइट स्टेटमेंट्स और रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके सो हाँ जी, ये आपका जो ऑप्शन है वो कहता है कैंसरस सेल्स शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. दैट इज करेक्ट, दैट इज एन करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? Metastasis is the most feared property of malignant tumors. This is also a correct statement. Malignant tumors invade and damage the surrounding tissues, and the malignant tumors cells grow slowly. Wait, sorry. मैंने बोला a cancerous cells show a property of contact inhibition. This is an incorrect statement because cancerous cells do not show a property of contact inhibition, and that is what that makes cancer cancerous. Like tumors तभी बनते हैं क्योंकि उनके पास contact inhibition की property नहीं होती. तो हमें चीज़ें बतानी है. Do not hold true उन्होंने बोला first statement में. So we'll have to ensure तो correct option does not mean anything. Correct क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखा होता है. अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी होती, आंसर नहीं लिखा होता. आंसर में हमें डू नॉट होल्ड ट्रू ही बताना है, तो हमें इनकरेक्ट चीज़ें बतानी. और ये मेरे पेपर में भी आता है ऐसा सा कंफ्यूजन. ठीक है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. तो ए तो गलत हो गए, मैंने अभी बताया है ना. एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो स्लोली, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं. दैट इज व्हाट मेक्स देम फियर्ड प्रॉपर्टी, द फियर्ड थिंग एंड मैलिग्नेंट. सो देन आपका ऑप्शन बिकम्स ए एंड डी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर 3 और एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया था, तो आगे ही बढ़ते हैं सीधा. ऑप्शन 10 दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और इसके बाद हम कल जल्दी से वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो हम कर रहे थे उसे पूरा करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 10. P plus Q whole square is equal to P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1 represents Hardy-Weinberg equation. It is used in 1. Population genetics, 2. Mendelian genetics, 3. Biometrics and 4. Molecular genetics. तो ये हमने जब पढ़ा ही एवोल्यूशन में अंडर पॉपुलेशन टॉपिक है. सो द आंसर शुड बी व्हाट? जल्दी से बताओ. जल्दी से बता दो, मैं जब तक वो पीडीएफ खोलती हूँ ह्यूमन वेलफेयर का. आई मीन ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर.
चलो, तो इसका आंसर इज ऑब्वियसली पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बिकॉज हमने पढ़ा ये जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, और ये होती है आपकी पॉपुलेशन स्टडीज के लिए। ठीक है, तो हम चलो अब दिस इज ओवर। अब हम ह्यूमन माइक्रोब्स करते हैं। ठीक है, पीडीएफ आ गया ना। तो हम यहाँ तक किए थे कल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल हुआ था, आई वांट यू गाइस टू राइट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखो एसिड का नाम, एसिड या एंजाइम्स का नाम, एंजाइम्स। ठीक है, देन मेक अ टेबल, एंड यहाँ पे लिखो कि नेम ऑफ द माइक्रोब, नेम माइक्रोब का, और यहाँ पे लिखो कि वो क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है। और ये टेबल आप पीछे वाले जो कर्ड वाले उसमें टॉपिक है उसके लिए भी बनाओ। ठीक है, यप। सो हमें इसलिए हम कहते हैं एस्परजिलस नाइजर इज अ फंगस of citric acid that produces citric acid. Acetobacter aceti is a bacteria that produces acetic acid. It's very given in the name. Clostridium butylsum is a bacterium. इसके नाम में ही बैक्टीरिया है, and it produces butyric acid. And इसके नाम में butyric भी है, butyric acid भी है. Lactobacillus is again a bacteria that you know, and it produces what? Lactic acid. Now yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used for commercial production of ethanol. You already know that. And जब हम इसको as alcohol producing uh, yeast use करते हैं, so it's known as brewer's yeast. And जब हम इसको बेकिंग के लिए यूज करते हैं यीस्ट को, तो दैट इज नोन एज बेकर्स यीस्ट। बट लेकिन होता क्या है, दोनों होते सैक्रोमाइसिस सेरेविसे ही है। ठीक है ना। ओके वेट, एक किसी ने लिखा है दैट एफ्लोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज एफ्लोटॉक्सिन्स। ओके, सो बेसिकली एफ्लोटॉक्सिन्स ना, दे आर काइंड ऑफ कार्सिनोजेंस होते हैं, या फिर म्यूटाजेंस बोल सकते हैं। म्यूटाजेंस समझते हो, जो कि जो डीएनए म्यूटेशन में जो करवाते हैं ना, तो लाइक जो डीएनए म्यूटेशन वाली बीमारियां होती है वो म्यूटाजेंस। ठीक है, सो कार्सिनोजेन समझ सकते हैं, म्यूटाजेंस समझ सकते हो। दैट मतलब टॉक्सिन इज व्हाट, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, सो again, wow, coincidentally, I don't know when did you write this, but Aspergillus niger also, this fungus also kind of produces this aflatoxin, but yeah, this is something poisonous. This is a toxin. Right. Anyway, let's move forward. So lipases are used in detergent formations. हम detergent में lipases क्यों use करते हैं? What are lipases? Lipases are जो lipids को break down करे। तो हमें lipases detergent में इसलिए चाहिए होता है that if you get oily stains, oil में क्या है, lipids है। Oils को हम साफ करें, laundry में oily stains हो, तो that can be cleaned by lipases. Lipases will break down the lipids and that will be cleaned. ठीक है, फ्रूट जूसेस जो आपके मार्केट में होते हैं वो क्लियरर होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी मेक एट होम। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस व्हाट, जो फाइबर है आपका उसको कट डाउन करता है। प्रोटीएसेस इज प्रोटीन्स। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज नोन एज अ क्लॉट बस्टर, जो कि क्लॉट्स हटाता है ब्लड वेसल्स से। ठीक है, फ्रॉम पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल that have undergone myocardial infarction. Another bioactive molecule is cyclosporin A, which is what, an immunosuppressant, जो हम organ transplant में use करते हैं because हमारी body resist करती है to accept that as its own. ठीक है, so it is produced by Trichoderma polysporum.
ये सब मुझको ये टेबल में आप लोग ये भी लिखना, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, ट्राइकोस्पर्मा पॉलीस्पोरम व्हिच इज अ फंगस, ठीक है। नाउ statins आर प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, ऐसे statins प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरस एंड देन यीस्ट, ठीक है। एंड यूज क्या करते हैं, यूज क्या होता है इसका, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। तो मोनास्कस का पर्पस ये है लाइफ में कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करे। मोनास्कस परप्यूरस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। एंड व्हाट करता है कि कंपेटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने केमिस्ट्री में वो लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, या फिर आई डोंट रिमेम्बर, लास्ट के 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर में वो एंजाइम का एक्शन समझाते हैं। तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग समझ आ जाएगा आपको क्या होता है, या फिर मैं समझाऊं, अगर आपको समझना है तो मैसेज चैट में लिख दो, ठीक है। नाउ सीवेज ट्रीटमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ना। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिसे एसटीपीज कहते हैं। ट्रीटमेंट हम ऐसे पानी को छोड़ नहीं सकते, हमें ट्रीट करना पड़ता है वाटर। सो फॉर दैट वी डू प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इज़ द फिजिकल ट्रीटमेंट। पी से प्राइमरी, पी से फिजिकल, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, वी आर वी डू फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है कि हमने एक फिल्टर रखा, पहले बड़े मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर हमने एक और फिल्टर रखा, छोटे निकाले, फिर और रखा, फिर और छोटे निकाले, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट एंड दे आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। वो सेटल डाउन हो जाते हैं एंड दे रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। और जो भी उसका सॉलिड सेटल होता है नीचे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। एंड जो उसका सुपरनेटेंट होता है, जो इफ्लुएंट होता है, वो हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं। ठीक है, सो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। एरेशन टैंक्स में क्या डालते हैं, क्योंकि हमें एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ, एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि फ्लॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, वाटर फ्लॉक्स, masses of bacteria associated with fungal filaments to form a mash-like structure. So this is mass. Consider this to be masses of bacteria. ठीक है, like ऐसे ऐसे समझ लो एंड इसको इसको फंगस समझ लो। तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर ऐसा सा बना देते हैं, ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स। एंड ये जो माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं तो ये ना ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जितना बीओडी ज़्यादा होगा उतना आपका पोल्यूशन ज़्यादा होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड of the effluent. BOD क्या होता है? BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria. Amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water was oxidized by bacteria. तो जो organic matter है उसको अगर मैं oxidize करूँगी तो उसके लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन लगेगी, that is BOD. तो जितना ज़्यादा organic matter होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, तो that is BOD. तो जितना BOD हाई होगा पोल्यूशन उतना हाई होगा, ठीक है। ये एक सिंप्लिसिटी के लिए ना अपने अपने उसमें लिख लो, अपने एनसीईआरटी में साइड में, आई होप लिखा हुआ ही होगा। ये एरो का साइन मेरे पास था नहीं तो मैंने प्लस प्लस लगा दिया। जितना बीओडी ज़्यादा होगा उतना पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। नाउ द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more it is polluting potential. So now once the BOD is significantly settled, ठीक है, तो जो bacterial flocks होते हैं are allowed to sediment. This sediment is called active sludging. This sediment is called active sludging.
तो एक्टिवेटेड स्लज, सॉरी, सो जो एक्टिवेटेड स्लज हम बनाते हैं, सो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज we put that back into the aeration tank. Why do we do that? Because that serves as an inoculum. ठीक है, the remaining part of the sludge हम डालते हैं in aerobic sludge digesters में. तो उसमें aerobically जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, ठीक है, सॉरी, माइक्रोब्स जो इनएरोबिकली ग्रो करते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई को इन द स्लज, एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन bacteria produce what? They produce methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide, which is known as biogas, which is also a source of energy and it is inflammable. ठीक है, so then this effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies. ठीक है, so this is the thing. और इसमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना, यमुना एक्शन प्लान एंड गंगा एक्शन प्लान, दिस इज important. Now then we have microbes in the production of biogas. So we all know कि जो lumen of cattle, मतलब हमें पता है ना कि जो काऊ होती है वो पहले च्यू कर लेती है and then they store it, half chew किया हुआ leaves and cellulose, and then they chew it back, so they chew it हमेशा. So जो lumen होता है, a part which is a part of stomach of cattle, it contains what? It contains methanogens. Methanogens का एक example है, sorry, methanogens का एक example है methanobacterium. ठीक है, so मिथानो, और ये जो बेसिकली गोबर प्रोड्यूस होता है वो उसमें मिथानोजेंस होता है और उससे हम मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट बिकम्स अ बायोगैस. ठीक है, एंड दिस इज अ बायो गैस प्लांट. एक सेकेंड, दिस इज अ बायोगैस प्लांट. तो हम कहाँ गया, हाँ, तो जो बायोगैस प्लांट होता है, दिस इज लाइक अ टैंक और दिस इज वेरी इन डेप्थ, लाइक 10 to 15 डीप इन होता है ग्राउंड में. ठीक है, एंड वहाँ पे जो बायो वेस्ट होता है, लाइक जो स्लरी होती है, स्लरी ऑफ डंग, उसको हम डालते हैं, उसको हम फिर कवर करते हैं. ये जो ये है इसको हम कवर करते हैं. नाउ इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है ये अलग जाती है, यहाँ से गैस प्रोड्यूस होके ऐसे निकल जाती है, ये आउटलेट होता है गैस का. और जो स्लज होता है वो स्पेंट स्लरी होती है, स्पेंट स्लरी मतलब यूज्ड स्लरी होती है, उसको हम अनदर आउटलेट में स्टोर करते हैं, एंड दैट बिकम्स अ फर्टिलाइजर. So cattle dung is available in large quantities in rural areas. It serves a variety of purposes. And we have to know that IARI, which is Indian Agriculture and Research Institute, and Khadi, KVIC, Khadi and Village Industry Commission, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था बायोगैस टेक्नोलॉजी का. एंड IARI से मुझको एक और चीज़ याद आती है, दैट CUET का एग्ज़ाम फॉर साइंस स्टूडेंट्स लाइक यू जो PCB में ले रहे हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर गोइंग टू डू एनी ऑनर्स कोर्स या बैचलर्स कोर्स फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो. ठीक है, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट गोइंग इन एग्रीकल्चर रिसर्चेस, एंड उसमें आप इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को यू कैन कंसिडर. इट्स इन दिल्ली ऑल्सो, पूसा रोड में है, एंड दिल्ली में ही ICAR भी है, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. आई विजिटेड दैट प्लेस, बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग फॉर माई एडमिशन, तो यू कैन कंसिडर दैट. ठीक है, नाउ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. तो ये जो देखो, तो इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि हम जब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज को, हेल्दी माइक्रोब्स को भी हटा देता है. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि गट बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स खाओ, प्रोबायोटिक्स लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ जो आपके अंदर है उनको मतलब उनको फीड कर रहे हैं, तो कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं दैट वी ईट.
एंड जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. सो इट इज़ एडवाइजेबल जब आप एंटीबायोटिक्स ऐसे खा रहे हो तो प्रोबायोटिक्स लो साथ में. आई मीन सॉरी, कर्ड खाओ साथ में, क्योंकि वो आपके गट हेल्थ में काम आता है. ठीक है. तो ये जो है, इसमें सेम चीज़ लिखी हुई है कि जो एग्रीकल्चर में भी अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, बुरे माइक्रोब्स होते हैं. बुरे माइक्रोब्स को मारने के चक्कर में हम अच्छे माइक्रोब्स से मार देते हैं. तो हम प्रिडेशन मेथड यूज़ करें. हम ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेस्ट को हम पूरा इरेडिकेट नहीं करते, बट हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस यूज़ करते हैं. मान लो हमारे पास सॉरी मान लो हमारे पास ए पेस्ट है, हमारे पास बी पेस्ट है, हमारे पास सी है, हमारे पास डी है. ठीक है. अब सी जो है ए को खाता हो और डी जो है बी को खाता है, एंड ये हमारे पास गुड है, गुड माइक्रोब, और ये हमारे पास बैड माइक्रोब है. हमें बी को मारना है, लेकिन अगर हम इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, लेट्स से ई, तो ये दोनों को मार देगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें बी को मारना है तो हम डी को ले आए, मतलब हम एक उसके प्रेडेटर को ले आए, या उसको मारने वाले किसी एजेंट को ले आए. सो दैट विल किल बी नॉट ए, एंड दैट तो हमारे पास गुड पेस्ट रहेगा और बैड माइक्रोब नहीं रहेगा. तो यार गुड माइक्रोब्स होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, फॉस्फोरस फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं. सो दैट्स हाउ वी कैन यूज बायोलॉजिकल मेथड्स. ठीक है. सो दिस इज एन होलिस्टिक अप्रोच जो इरेडिकेशन के लिए फॉर पेस्ट इज यूज्ड. ठीक है. सो ये बीटी टॉक्सिन के बारे, यार सॉरी, this is about BT toxin which we've already done, तो I don't think so this is necessary. बस इसमें कुछ examples हैं कि जो dragon flies होती हैं that is useful to get rid of aphids and mosquitoes. ठीक है. लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज. दैट कैन कम इन योर एग्जाम, तो इसको नोट कर लो. ठीक है. बैक्यूलो वायरस क्या होते हैं? दीज आर पैथोजेंस दैट अटैक insect and other arthropods. They are like the majority baculovirus are used as biological control agents. Why? Because they are very insect मतलब they are very specific to the targeted insect groups, और वो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को नहीं मारते. So that's why integrated IPM program, integrated pest management IPM program में it's very necessary. नाउ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं. एंड इसमें कुछ कुछ बैक्टीरियाज दी हुए हैं, लाइक फ्री लिविंग सॉइल में एसोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर. ठीक है. दीज आर फ्री लिविंग. देन वी हैव राइजोबियम जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है ऑफ लेग्यूम प्लांट्स. एंड देन वी हैव माइकोरिजा फॉर फॉस्फोरस. ठीक है. देन वी हैव साइनोबैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रोब्स, and which can also fix atmospheric nitrogen. And cyanobacteria के example है आपके Anabaena, Nostoc and Oscillatoria. And this is used in paddy fields में cyanobacteria serves as a very important biofertilizer. Fertilizer क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को आपका वो कर रहा है. So we have blue green algae also, and that increases increases the fertility and replenishes the soil. चलो अब हम थोड़ी बस समरी पढ़ के इसे एंड करते हैं. Microbes are very important. Bacteria called lactic acid bacteria lab grow in the milk. Saccharomyces cerevisiae for yeast, है ना. इडली और डोसा में फर्मेंटेशन होती है बाय माइक्रोब्स. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज्ड टू इम्पार्ट पर्टिकुलर टेक्सचर, taste and flavor to cheese. Microbes are very important industrially, like they produce lactic acid, acetic acid and alcohol. Lactic acid कौन करता था? Lactobacillus. Acetic acid कौन करता था? Acetobacter aceti. And alcohol Saccharomyces cerevisiae. Antibiotics like penicillin are used to are produced by useful microbes and kill the disease causing harmful microbes. तो ये प्रोबायोटिक है हमारे लिए एंड एंटीबायोटिक है फॉर द बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शियस डिजीजेस को भी
कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, लाइक डिप्थीरिया, वोपिंग कोल्ड एंड निमोनिया। ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन में भी हमारा काम होता है। मिथेनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है डिग्रेडिंग प्लांट वेस्ट। बायोगैस होती है रूरल एरियाज में। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी किल्ड, माइक्रोब्स कैन ऑल्सो किल हार्मफुल पेस्ट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, बायो कंट्रोल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स को इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वी कैन यूज़। एंड या दैट वाज इट। एक बार एनसीईआरटी देख लिया करो, क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट always and always everything depends on एनसीईआरटी। So guys, yes, that was it for today, है ना? And I hope you guys enjoyed the PYQs, मतलब enjoy क्या करोगे, थोड़ा समझ आए हो। And yes, thank you. Do check out exam factors के crash course and mock test series, and we'll meet again tomorrow. Thank you so much.